Hello students, today we will be discussing 10th standard geometry, and in 10th standard geometry we will be discussing our first chapter, that is similarity. We had already studied our first theorem of similarity. Today we will be discussing our second theorem of similarity, which is basic proportionality theorem. It is also known as Thales theorem. Now we will just go through exactly what does this basic proportionality theorem says. Which theorem we are studying? Basic proportionality theorem. Basic proportionality theorem. Now what does this basic proportionality theorem says? Everyone knows a triangle. Suppose of all, if I am taking this triangle P Q R. Now students, how many sides does this triangle have? This triangle is having 3 sides. Everyone knows it. First side PQ, second side QR, and third side PR. Now what does this theorem says? This theorem says that if I am drawing a line, I am drawing a line parallel to one side of a triangle, any one side of a triangle. If I am taking this side QR, and I am drawing a line L. Suppose of all, if I am drawing a line L, this is my line L, and this line L is parallel to one side of a triangle, that is QR, and this L is intersecting the other two sides. Which are the other two sides, students? Side PQ and side PR. So line L is intersecting side PQ at point M, suppose of all, and line L is intersecting side PR at point N. What we had studied till now? Basic proportionality theorem. And what does it say? That in a triangle, if a line is drawn parallel to one side of a triangle and it is intersecting the other two sides in two distinct points, then the line will divide those two sides in proportion. Proportion means this, the value of PM upon MQ is equals to the value of Pn upon Nr. This is what the theorem says. What does this theorem says? That if I am drawing a line L parallel to one side of a triangle and it is intersecting the other two sides in two distinct points, then the line divides those two sides in proportion, that is Pm upon Mq is equal to Pn upon N. Now, what is given in this theorem? Given in triangle PQR, line L is parallel to side QR. What is given? First, line L is parallel to side QR. That is given. Second, what is given? That this line L is intersecting side PQ at which point? M. Second, what is given to us? That line L intersects side PQ at point M. Again, what else is given to us? That again this line is intersecting side PR at point N. Third, what is given to us? That line L intersects side
Which side? PR. At point N. So this is given to us. Also I can say here that P dash M dash Q, that is P, M, Q are collinear, and P dash N dash R, that is P, N, R are collinear points. So I can say that also, P dash M dash Q and P dash N dash R. This is what is given to us. And what we are supposed to prove, that this line is dividing these two sides in proportion, that is Pm upon Mq is equals to Pn upon Nr. So we need to prove here, to prove Pm upon Mq equals to Pn upon Nr. Now for proving this theorem, we need a small construction. What is the construction here? We will join Rm and we will join Qn. A small construction is there. So construction, what is our construction? Join Qn and join Rm. Join Qn and Rm. Now we will prove this theorem. Okay, I will write down here the proof of this theorem. Proof. Now students, look closely at triangle PMN and triangle QMN. Can everyone see a triangle PMN and triangle QMN? I will draw separately for you these two triangles. That is triangle PMN and triangle QMN. आपको याद आ रहा है what we had studied in our earlier theorem? Ratio of the areas of two triangles. Theorem 1.1. What we had studied in the theorem? That suppose of all these two triangles, triangles PMN and triangle QMN. अभी PMN का बेस क्या है? PM. QMN का बेस क्या है? QM. ये दोनों बेस क्या आ रहा है? एक ही लाइन पे आ रहा है. They are coming on the same line. और दोनों भी ट्राइंगल का जो वर्टेक्स है वो कॉमन है. That is N. We had studied it earlier. That triangle PMN and triangle QMN. दोनों का बेस एक ही लाइन पे आ रहा है और वर्टेक्स कॉमन पॉइंट है. तो व्हाट विल बी द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल? एरिया ट्राइंगल PMN, रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्राइंगल, एरिया ट्राइंगल PMN अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल QMN. The ratio of these areas of two triangles will be equal to the ratio of the corresponding bases. Why? Because ये दोनों ट्राइंगल का हाइट सेम है. हाइट सेम कब होता है? जब दोनों ट्राइंगल के बेसेस एक लाइन पे आते हैं और दोनों ट्राइंगल का वर्टेक्स कॉमन होता है. एक वर्टेक्स उनका n है, ये कॉमन है, और दोनों का बेस क्या आ रहा है? एक ही लाइन पे आ रहा है. तो उनका अगर रेशियो लेंगे, रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ दिस टू ट्राइंगल्स विल बी इक्वल टू रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग बेसेस, दैट इज PM अपॉन QM, दैट वी हैड स्टडीड इन आवर अर्लियर थ्योरम. और इसका रीजन क्या होता है? ट्राइंगल्स विथ इक्वल हाइट्स. क्यों इक्वल हाइट है? क्योंकि दोनों का बेस कॉलिनियर है, एक ही लाइन पे आ रहा है, और दोनों का वर्टेक्स एक कॉमन पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है. इज दैट क्लियर? ओके, सो नाउ वी विल जस्ट गो थ्रू दिस टू ट्राइंगल्स. सो इन ट्राइंगल PMN and triangle QMN, what we can say? What is the ratio of the areas of these two triangles? The ratio of these areas of these triangles will be area triangle PMN upon area triangle QMN,
will be equal to the ratio of their corresponding bases. Why? Because both these triangles are having common height, same height. So will be equal to PM upon QM. I'm just rubbing it. And what is the reason for this? The reason is triangles with equal heights. I'm giving it as equation number 1. Any queries still here? हमेशा थ्योरम प्रूव करते समय बैक ऑफ द माइंड आपको पता होना चाहिए आप क्या प्रूव कर रहे हैं. हम लोग यहाँ पे क्या प्रूव करना चाहते हैं कि ये जो लाइन जो है जो पैरेलल है एक साइड को वो बाकी दो साइड को प्रोपोर्शन में डिवाइड कर रहा है. इसका मतलब पीएम अपॉन एम क्यू इक्वल्स टू पी एन अपॉन एन आर. वी आर प्रूविंग दैट. अभी हमको क्या मिला? पीएम अपॉन एम क्यू एम मिला. क्यू एम एंड एम क्यू आर सेम. पीएम अपॉन एम क्यू मिला अपने को. नाउ व्हाट वी आर सपोज टू फाइंड? वी आर सपोज टू फाइंड पीएन अपॉन एनआर. अभी Pn अपॉन एनआर के लिए आप कौन सा दो ट्राइंगल लेंगे? Which two triangles we will take to find Pn upon nr? Very good. Triangle PMN and triangle RMN. These two triangles we will take. So I am just taking the next two triangles in triangle PMN and triangle RMN. Now again, as we had proved it earlier, just look carefully at these two triangles, PMN और RMN. PMN का बेस क्या है? PN. RMN का बेस क्या है? RN. दोनों का बेस क्या है? एक ही लाइन पे आ रहा है और दोनों का भी एक कॉमन वर्टेक्स है M. So what will be the ratio of the areas? What will be the ratio of the areas? Area triangle PMN upon area triangle RMN will be PN upon RN or NR. Why? Again, triangles with equal heights. So I can say easily here, that is area triangle PMN upon area triangle RMN is equals to PN upon RN. Same reason, triangles with equal heights. This I am giving at equation number 2. Now students, what we can find from equation 1 and equation 2? In equation 1 we found Pm upon Qm, and equation 2 we have found Pn upon Rn. Just look here, Pm upon Qm means Pm upon Mq, Pn upon Rn, Pn upon Nr. अगर ये दोनों प्रूफ करने का है इक्वल तो उसका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होना चाहिए. लुक एट लेफ्ट हैंड साइड. दिस इज एरिया ट्राइंगल PMN अपॉन एरिया ट्राइंगल QMN. व्हाट इज योर एरिया ट्राइंगल PMN अपॉन एरिया ट्राइंगल RMN. आपका PMN न्यूमरेटर सेम है. इफ QMN और RMN ये दोनों ट्राइंगल्स का एरिया सेम हो गया तो क्या आपका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाएगा? और अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गया तो अपना राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगा. सो व्हाट वी आर सपोज टू डू नाउ, वी आर सपोज टू फाइंड इट दैट वेदर एरिया ट्राइंगल QMN and area triangle RMN are equal or not. Just look at the figure and you let me know that whether QMN and RMN, area triangle QMN or area triangle RMN are equal or not. Can you see it? Now our QMN RMN दोनों का बेस सेम है MN, और दोनों कहां पे आता है? पैरेलल लाइंस के बीच में आ रहे हैं. इसका मतलब हाइट भी सेम है. अगर बेस भी सेम है और हाइट भी सेम है तो आई कैन ऑब्वियसली से कि दोनों का एरिया भी क्या हो जाएगा? सेम होगा कि नहीं? वी हैव स्टडीड इन आवर अर्लियर थ्योरम कि अगर बेस सेम है, हाइट सेम है तो एरिया ऑब्वियसली विल बी सेम. तो आई कैन से हियर इजीली दैट एरिया ट्राइंगल, विच एरिया ट्राइंगल? QMN is equal to area of triangle RMN. And what is the reason for that? That these triangles have common base MN and same height. So what I will write down the reason? Triangles
with common base. What is the common base? Mn, and same height. Triangles with common base Mn and same height. I will give it as equation number 3. Now look carefully at equation 1, equation 2 and equation 3. Equation 1 में क्या था? Area triangle PMN upon area triangle QMN. Equation 2 में क्या था? Area triangle PMN upon area triangle RMN. And equation 3 में क्या prove किया हम लोगों ने? QMN is equals to RMN. So that means what? Our LHS of first and second are same. अगर आपका LHS first और second का same है तो obviously आपका right hand side of equation will also be same. So from equation 1, 2 and 3 I can easily say PM upon QM equals to PN upon RN. So I'll continue it here. I can say that therefore PM upon QM equals to what is? PN upon RN. Why? From equation 1, 2 and 3. That is, अगर इसको प्रॉपरली हम लोग लिखेंगे, हम लोग को क्या चाहिए था? PM upon MQ. Can I write QM as MQ? Obviously. Can I write NR as RN as NR? Obviously. So I will write down PM upon MQ equals to PN upon NR. Hence, our theorem is proved. The full basic proportionality theorem is proved. In brief, I will just say what does our theorem says. Our theorem says that if I am drawing a line L which is parallel to one side of a triangle, and if it is intersecting the other two sides in two distinct points, then this line will divide the other two sides in proportion. That is PM upon MQ is equals to PN upon NR. Given हम लोगों ने लिखा कि लाइन L इस किसको पैरेलल है? साइड QR को. लाइन L PM को कहाँ पे, PQ को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है? M पे. लाइन L PR को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है? N पे. और क्या हम लोगों ने किया? P डैश M डैश Q और P डैश N डैश R. ये गिवन था. प्रूव क्या करना था? PM अपॉन MQ इज इक्वल टू PN अपॉन NR. ये अपने को प्रूव करने का था. इसके लिए हम लोगों ने एक स्मॉल कंस्ट्रक्शन किया. क्या कंस्ट्रक्शन किया? जॉइन QN एंड जॉइन RM. उसके बाद हम लोगों ने क्या लिया? अपने को क्या प्रूव करने का? PM अपॉन MQ. तो PM अपॉन MQ कौन से दो ट्राइंगल्स में आता है? PM आता है ट्राइंगल PMN. QM कौन से ट्राइंगल में आता है? QMN. तो आई टुक दोस टू ट्राइंगल्स PMN and QMN. तो what I had found, area triangle PMN upon area triangle QMN दोनों का हाइट सेम है, तो will be ratio of the corresponding bases. Similarly, I found PN upon NR. Then I proved that this area of this triangle and area of this triangle are same. So obviously after that I can say that PM upon QM is equal to PN upon RN. That is PM upon MQ is PN upon NR. This is the most important theorem of similarity, basic proportionality theorem, also known as Thales theorem. I hope you understood it. Thanks.